Hey guys, welcome back. Am I audible? स्केच भाई हो अभी भी स्ट्रीम में आ गए? यार नोटिफिकेशन गया है नहीं या फिर सब बिजी हैं आज? थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट कर दिया क्या मैंने? Am ये आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही है? Hello, I'm audible. Hmm, good. Is it? Is the- Okay, now we have it. Mm, so- Okay. Now am I audible clearly? Hello.
क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आप सभी में तो कोई है ही नहीं यहाँ, या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। Has anyone joined us? I was hoping के today people will join. ओके, यहाँ पे तो 3 concurrent viewers बता रहा है, बट अपडेट क्यों नहीं पाई? Guys, if you are there, can you do a comment on the live chat? Okay, people can. Okay, now I think it is updating. Okay, now it is updating. So there is someone out watching our live stream. So today we will begin with strings, right? Yesterday we had solved all the remaining problems in binary search and also started solving string problems. कल हमने 2 strings के problems कर लिए थे, कुछ basic वाले. आज हम like पूरा strings खत्म कर देंगे. Let's duplicate it. Can I duplicate it? It is step number 5, lecture number 1, and that is strings, easy to medium problems. Easy problems and strings. आज थोड़ा हम अप्रोच चेंज करेंगे. Like I will be learning the concepts as well. Mm, let's get it. Okay, let's update the problems for today. We will try to solve this problem again. The first problem in strings, that is remove outermost parenthesis. Okay, remove outermost parenthesis. Okay, parenthesis and reverse words in a given string. Reverse words in a given string. Okay, and then we will do largest odd number in a string. After that, we will do longest common prefix. And then isomorphic string. Then check whether string is a rotation of another or not. Whether one string is a rotation of another
and then check if the strings are anagram of each other. Check if two strings are anagram of each other. Okay, so our first goal is to solve this problem in the first half, like before, in just 1 hour. Okay, and the good thing is that we will be also learning the concepts through our copilot. Okay, it is day 21. Let's go 21. Let's go day. I think I should update these as well. Hmm. So I think आज मैं अकेला ही स्ट्रीम करता रहूंगा. People are not joining us. Anyways, we have to complete our challenge. So it is required that I spend more time solving problems. Mm, okay, researching. Okay, done. It looks good now. So today is day one, and let's make a file name notes. Okay, underscore 00 underscore notes underscore strings in Java. Strings in Java notes. Okay, and I think while we are learning the concept, mm, let's keep our VS Code in full screen, right? Let's lock it and then make it full screen and it is there and put it over everything else. Okay, now we are ready to go. Let's open. Okay, we had no, we don't want inline check, we want check, right? And we want new check. So yeah. Now to revise the basics of strings, we will give a prompt to Copilot to make a quick. Okay, let's use mm, Claude Sonnet 4. Okay, we will be using Claude Sonnet 4 to make a quick. अच्छा पहले चैट जीपीटी से कराते हैं prompt generate. What we will say, we will ask ChatGPT to write a detailed prompt to क्या करना है हमें लाइक क्विकली रिवाइज करना है ना क्विकली रिवाइज okay, so we have given a prompt to ChatGPT to write a detailed prompt, and here it is.
You're an expert Java DSA instructor. I want you to quickly teach me strings in Java with a balance of theory, code snippets, and interactive exercises. Make the learning process structured, easy to understand, and problem solving oriented. Part 1 Java String Fundamentals, Basics of Strings. Okay. Hello, Rajat. Welcome to our stream. I think it is for the first time you're joining us. Let me introduce you. My name is Harshit and I'm a final year BTech student जो कि थोड़ा लेट हो गया है. I took this challenge to solve 445 DSA problems in Striver's A2Z sheet in just 45 days. And we are on 20, day number 21. Till now, I was just solving problems by myself on my own pace. But today I decided that I will also be learning the concepts and revising the concepts on the live stream itself. Right? First, we will revise the concepts on the live stream and then we will start solving the problems. Okay? Hope you will like the like our stream. पता नहीं आज मैं इतना nervous क्यों हो रहा हूँ. And it is the first time that we are starting our stream so early. Usually, I start my stream at around 10 p.m., right? Tell us about yourself, Rajat. Where are you from? What are you doing? Are you a working professional or currently in college? Okay, it is taking 2 years time. Okay, so it has been created a whole. Okay. Hmm. इसने तो 7 days लर्निंग प्लान बना दिया हमें तो एक ही दिन में करना होगा. Okay, sliding window 2 pointer frequency map string builder pattern optimization checklist. Okay, Rajat is a third sem student and he has also started. Have you like which language you are using to learn programming? Like Java or C++? You might be learning C++, maybe because it is there in the syllabus, right? Okay, we did not turn on our camera. C++, that is fine. You can switch, like you can learn any language and start solving DSA problems. So there might be some difference in the string syntax and concepts and strings in Java and C++. You can follow along if you want. So it has created a quick revision guide for strings in Java. So let's read it quickly. So there are four different ways in which strings can be stored in Java. The first is a string class, which creates objects. And the second is character array, which stores character in array with data type as character. And then string builder. String builder is mutable
And string buffer, it is also mutable, but it is multi-threaded and it is single-threaded. This is okay. Okay. One important point is strings in Java are immutable by default. So we use string builder, buffer, and string builder for immutability. So I'm just revising my concepts. So let's add more things that I remember. So there are two ways to declare strings. अच्छा हाँ यहाँ पे examples दिए हैं ना. Okay. It has created a like really good text for revising. So here, as you can see, string str is equals to hello. We are creating a variable str in which we are storing hello. So this is immutable. It means that we cannot change the value of str. Like for example, if we try to change the value of str as update the value of str as world, WRLD world, then it will not work. Acha, let's make some basic programs on the go. Okay, let's create basic string.java. Basics of Java. So here we have this. There is our first program. इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए. Hmm, okay. I hope now it is visible clearly. Hmm, so the first thing is we have created a class and let's create a driver code PSVM. And let's say we have created a string 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 str is equals to hello. Okay. Mm, let's print it str. So what we are doing, we are creating a variable and storing hello in that variable and trying to print it. Okay, let's run this program and see what happens. It is printing hello. Okay, so it is working fine. Now, what the problem is, if we try to update the value of str with something else, str is equals to, if we try to update str with hello world, hello world, hello world, and let's see if it works and print it again. Okay, str and then, sorry, str. Okay, now let's try to print this and run it. Okay, what will happen? Like you guys, whoever is watching, can you predict what will be the outcome of this program if we run it? Tell me, will it print hello only? Like hello only, or it will print hello world? Hello world. Can anyone tell? अच्छा ठीक है, you guys are not listening. Okay, I'll decide, right? So yes, Rajat is right. So it will print hello only क्योंकि ये mutable है, but you're wrong. It has changed the reference, right? यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो string str ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना,
उसकी वैल्यू अभी भी वही है, बट it has just created a new object which is storing hello world. It's like str was pointing to object one, which was hello. Okay, but but it is updated with str. Now str is pointing at object two, which is created freshly and which is storing hello world. Okay, but the problem with this is that the object created before is also stored in the memory. So if we keep changing the value inside the object, it will keep creating new objects and it will end up in Stack Overflow, right? Okay, we will learn about it afterwards. Let's complete this particular point. So it is immutable string str. Like this is one way of storing strings in Java, which is by creating variables. str वेरिएबल बनाया हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप का, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड को स्टोर किया, जो कि इम्यूटेबल है. देन वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स which can store strings, right? Like string characters. So this is another way of storing strings. Let's skip it for a while. This is the, let's say, methods of storing strings in Java. Okay. So the first method is by creating a variable. Okay. And then another method is by creating an array. Okay. By creating an array of characters. Character array भी बोलते हैं इसको. Like by creating an character array. Okay. So how can we create it? By writing character. Like this is the data type that we are giving and the syntax for creating an array of characters. Then we can give it name anything like string or str is equals to. Then we will give different characters separately like h e, like let me write it, h e double l o hello. तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अब इतना क्यों करना है. यहाँ से सारे कैरेक्टर्स को कॉपी किया और यहाँ पे स्टोर कर दिया. तो नाउ इट इज द एरे ऑफ कैरेक्टर्स. ओके. सो str is already created, we cannot assign this name. What should we give it? Array दे देते हैं यहाँ पे, जैसा एग्जांपल में दिया. So okay. And how can we print array? Do you have idea? We use for loop to print array elements, right? So should I print it? Let's print it. SOUT ARR. अच्छा बताओ यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट ठीक से चलेगा या नहीं. आई एम टेलिंग दैट इट विल नॉट वर्क. इट विल रिटर्न सम integers. Will return the address of the character array. I think I might be wrong. मतलब ठीक है, मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ. तो ट्राई करते हैं रन करके. मुझे लगता है कि ये तो वर्क कर रहा है.
बट ये एसटीआर के केस में होता है शायद. ओके, नाउ आई विल रिमेम्बर. लेट्स रन इट. It's not wrong in that case as well. What's wrong with my सवाल मत पूछो. ओके, आई एम लर्निंग माई सेल्फ. मुझे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? ये चल कैसे रहा है वैसे? अच्छा ठीक है, इसको क्विकली कवर अप करते हैं. SOUTARR. So in this way we can print the characters here. Let's change the character HASHIT. Okay, now it is fine. Hmm. And the create third way of storing strings is. मुझे भी यही लगा था ये, लेकिन प्रिंट कैसे हो रहा है मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है. अच्छा, लेट्स चेक इट कि हाउ इज इट गेटिंग प्रिंटेड. मुझे भी वही डाउट है. लेट्स आस्क चैट जीपीटी अबाउट इट. वेयर इज द चैट? अरे, प्रिंट क्यों नहीं? Why this statement is working as expected? You are experimenting with the code. Let me explain. System works as expected with character arrays, and then we will continue with our interactive learning. ठीक है. The magic behind. ये क्या अपडेट कर दिया इसने? अच्छा, इसमें इतना सारा. ठीक है. Special treatment for character array print stream which system.out is has a specific overloaded method for character array. Different from object arrays. If you try this one, like कहाँ गया? क्या कहता है ये? स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर कैरेक्टर अरे ठीक है. डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एरेज इफ यू ट्राई इट विद सम अदर ऑब्जेक्ट्स. ओके, ठीक है. कैरेक्टर एरे को ना ये स्ट्रिंग्स की तरह ट्रीट करता है. ओनली विथ कैरेक्टर एरेज. Why character array is special? Because character arrays are commonly used to represent strings. Java provides this convenience method that iterates through each character and prints them as a continuous string. Okay, ठीक है. We take this input. So इसने क्या कहा कि जो कैरेक्टर एरे है ना उसको वो स्पेशल ट्रीट करता है. यहाँ पे जो नंबर्स इंटीजर एरे है उसके केस में ये नंबर्स को प्रिंट नहीं करेगा, बट क्या करेगा ये? अच्छा ठीक है. ओके. It will return the address of the array if we try to print integer array. हाँ, ये बस जावा में ही है, रजत. ओके, दिस इज गुड. देन स्ट्रिंग्स के केस में भी, मतलब स्ट्रिंग वाला एरे अगर क्रिएट करेंगे तो उस केस में भी ऐसा ही होगा. इट विल नॉट वर्क, बट इट विल वर्क इन केस ऑफ कैरेक्टर एरे. सो दिस इज अ गुड पॉइंट टू रिमेम्बर. ठीक है. मेथड बाय क्रिएटिंग अ कैरेक्टर एरे.
Okay, let's move to the next method of storing strings. That will be using string builder. Using string builder. ओके, सो स्ट्रिंग बिल्डर में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक और चीज है इसमें जो शायद इसने नहीं बताई है। यहाँ पे तो हम इसका सिर्फ वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, बट इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। ऐसा ही रहता है ना सिंटैक्स? लेट मी चेक फर्स्ट, आई फॉरगॉट। ये रहा, हाँ सही कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेमोरी के बारे में यहाँ डिस्कस किया हुआ है। गाइस मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? Okay, let's close it for a while and this as well. Let's read quickly and move forward. So the key concept is strings are immutable in Java. String pool is heap memory. Literal strings are stored in string pool for memory optimization. Multiple variables can reference to the same string object. Okay. So मेमोरी एग्जांपल स्टोर्ड इन स्ट्रिंग पूल, जैसा एग्जांपल मैं दे रहा था, जैसे कि हमने फर्स्ट वेरिएबल बनाया s1, उसमें स्टोर किया जावा को, एंड देन अगेन वी क्रिएटेड अनदर वेरिएबल नेम्ड differently like s2 and storing the same value. But what will happen, the value java is stored in string pool of java, हीप मेमोरी में स्टोर होगा, और जो नया वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे ना, वो पॉइंट करेगा सेम ऑब्जेक्ट को। मतलब जब हमने पहला ऑब्जेक्ट, मतलब पहला वेरिएबल क्रिएट किया, तो ये जावा के नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसको स्ट्रिंग पूल में स्टोर कर लेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम दोबारा सेम वैल्यू को यूज करते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, तो जो नया वेरिएबल क्रिएट होगा ना, वो सिर्फ पुराने वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। दैट मीन्स इट पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द पूल, राइट? नाउ, and if we want to create another object, like manually अगर हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं with the same values, then we will have to use this syntax, new string. Like we have to create new object in string class. And adding one more thing, this is a string variable. This is also a string variable, but this is a new string object. Okay. And one more thing, how can we check that it is pointing to the same object? Let's open it here. So here we are. Hmm, ये सबको डिलीट कर देते हैं, गैस इतना तो हम, इसको हम कमेंट्स में ऐड कर देते हैं नोट्स के अंदर। कंट्रोल एक्स, इतना तो समझ आया। Hmm, इसको एक और एक्स्ट्रा टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, अंडरस्कोर 00 अंडरस्कोर एग्जाम्पल्स एंड एक्सेप्शंस कर देते exceptions, and in this we will paste it. Okay, now we will like, ये जो दो चीजें हैं ना, स्ट्रिंग बिल्डर और कहाँ गया स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर, इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये म्यूटेबल है। पहले मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स learn about the string immutability.
the Prefix and memory. Okay, which is string pool. So, ठीक है. In Java, strings are immutable. That means once created, that cannot be changed. And what it means by once created, it means that if you have created an object string, sorry, variable, string string of type string s1 equals to, let's say, Harshit. Okay. So if you have created this object and if you create another, if you create another variable with name s2 and create like give the same value like Harshit, then it will not create a new object. Instead, point to the same object created previously in the string pool. Okay, that means new object created in the string pool in the heap memory. Okay. Now, if we try to compare, like when we try to print these two variables, it will be printed same. But if we try to compare, like SOUT S1 equals to S2. And let me remind you one thing, when we use this, it only checks the, let's run it first. It only checks the value that the variable stores, right? ये क्या इसने क्या output किया true. That means it says that those two variables are the same, but it only says about the value. It only compares the value inside the variable. Okay, that means it is not checking for the object. That means if the objects are different or not, right? Arey, sorry. It is working fine because the both the variables are pointing to the same object. Both the variables are pointing to the same object. This is why true. It is true. Okay. And then in this, if we check S1 equals to S3, what will it return? यहाँ पे एक एरर दे रही है ऑलरेडी क्योंकि string s3 is object type and it is variable string. Let's print it, like run the program, and it is ये इतने सारे errors. Let's fix them first. I will be solving all the random problems today somehow.
Why am I doing this? इसको तो डिलीट ही करते हैं. Just because it is showing so many errors, I'm fixing each one of them. Where is it? There's no error. Where is it? What is the error? What is the error, buddy? Put it inside. Okay. अभी भी ये सारे एरर्स क्यों हैं? टाइप सेफ्टी, Pascal, Java, missing repeating number, Palindrome, conjugates, basics.java. Forget it. Now it is giving only this error that we are comparing two different objects. Now if we run this program, build failed. Why? What is the problem with the अच्छा ठीक है, मैंने क्रिएट ही नहीं किया ना यार ऑब्जेक्ट, सॉरी. First we will create a S3 object as new string, and oh shit. Okay, now it will work. So let's run it, and it says false because both the variable and the objects are different, right? However, it stores the same value when we print it, but the objects that it stores inside the memory are different, right? So let's move to the next point. इतना समझ में आया कि there are two ways to store strings, one by creating a new object and one by creating a variable. And while creating a variable, the string object is stored inside the string pool. Okay. String object creation method 1 goes to string pool. ठीक है. Method 2 new keyword से जब हम बनाते हैं तो new object create होता है every time we use it. Okay. Method 3 is using character array. Character array is something like this. अच्छा ठीक है, इसने सब कुछ तो कर रखा है यार इसी ने. Why are we are doing so much? Hmm. And here it is that I was talking about. There are two ways in which we can compare two strings. Like one is equals, like s dot equals versus equals to ka sign. Okay. So the first thing is it compares the memory addresses, right? Last time we were getting true because it was comparing references. मतलब मैं जो कह रहा था वो सही था, but it was half truth, right? मतलब जो इक्वल्स टू वाला जो ऑपरेटर होता है, कंपेयर comparison operator, it compares the reference like memory address of the object, right? But if we compare by using equals object like method, it will compare the value inside the object, right? Actual characters. Here it is given. Now we need to remember this golden rule. Always use equals for string comparison. Okay. Essential string methods.
आज सर्जस क्यों हो रहा है यार? हम्म, मैं कहाँ था? So let's learn about the essential methods in string. Okay. So the length and character access for accessing the character and the length of the string, we use length and curly braces, not curly braces, simple braces. Okay. And then character at index to return the character at given index and dot to character array to convert strings to character array. Let's create another file named ER21 and create new file 02 underscore methods string methods dot java. Okay, we will create. Now let's learn about mm, different methods. So let's create a string variable named h is equals to Harshit. Okay, and if we want to get the length of the string variable, we will do h dot length. Okay, so it will give the length of the string. Let's store it in a variable named length. String length equals to h dot length, and we can print string length. And let's run it. It is giving 7. 7 is the length of the string. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is correct. Let's move to the next method. Next method is character at index. We can get the character at particular index. Wait a minute, guys. I will be back in a minute.
Hey guys, we're back again. So कहाँ थे हम? ठीक है. First method we have done with the length. ठीक है. इसको छोटा कर देते हैं यार, ये बहुत बड़ा हो जाएगा. S length कर देते हैं. S length. Okay. H dot length. Now, if we want to return the character at particular index, what we will do? We will use the method dot character at. Okay. So let's directly print करते हैं. H dot character at which index? Like let's return the first character, that is 0. Okay, at index 0. And let's run this. What it will return? It is returning H. H is the first character. Okay, we return 5. What it will return? It will return I. I is on the fifth index. Let's move to the next method. Length of the string. Okay, and here we are returning the character at index. Okay, then let's convert the string to character array. Okay, let's say SOUT H dot to character array. Okay, this method converts the string into character array, and character array gets printed easily. If you try to print H, will it work? Yes, it should. And if we अच्छा ठीक है, अगर ये string array होता तो वर्क नहीं करता. Okay, it is fine. Now these are the example that we have already been through. ठीक है. And we can store it to character array as well, like char array equals to h dot to character array and this way. And we can print arrow. It will return Harshit only, right? Hmm. Now, substring operations. These are the three most important methods that you will use frequently, and these are the examples. And now we will learn about the substring operations. Mm, let's make a separation. Let's separate it. And now we are substring operations. Okay. Let's create new variables like string, string. What happened? अच्छा ये मैंने क्या किया? What is the problem with this? There's no problem. So let's create a string variable str is equals to. What is the problem? Okay, this is the problem. Now I can do it. Mm, Substring methods. Okay. Now we will create a string named str is equals to Java programming. Okay. Java with space programming and semicolon. Now we have created a string named Java or named str with which stores Java programming as a string. Now we will use the first method to create a substring from start to end, like, and we will store it in a new
string name substring1 sub1 is equals to str dot substring and s dot length. अच्छा ये s length तो वो हमने पिछले वेरिएबल के लिए क्रिएट किया था. सो starting from fifth character, right? That means substring starting from given index to the end. Okay, it returns the substring. यहाँ पे return भी करवा लेते हैं. Return sub1. Okay, and let's run it. What it will print? It is printing programming. मैंने दो बार gra लिख दिया क्या? It is just programming, and it is returning programming. That means it is returning the substring starting from fifth index. The first index is 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and fourth is a space, and fifth index is starting with programming. So it is returning the whole substring starting from fifth index, that is programming. Okay, then let's learn about the next method, that is substring from start to end. Like we can return substring from starting index to ending index. We can give two indexes from where we want to return the substring. Like the first index, that let's say um, let's say we are starting from programming only, and then we are ending this substring at program only. Program. So where is it ending? If we want to return only program. So 5, 6, 7, let's say 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11th इंडेक्स पे जो सबस्ट्रिंग एंड होगी वो क्या होगी? प्रोग्राम. ठीक है. सो इफ वी रिटर्न इट, इट विल प्रिंट प्रोग्राम. अच्छा हमने प्रिंट ही नहीं किया अभी इसको. लेट्स प्रिंट दिस सबस्ट्रिंग एस यू बी सब 2. अरे करेक्ट क्यों नहीं हुआ? Now run this program. It is not returning the complete string because we need to add the index with +1. Now it is returning program. Okay. Now we can find the index of a particular character, last index of particular character. Okay, case and formatting to uppercase to lowercase to trim. Okay, split and replace, split regex. ठीक है, replace. Let me take some paracetamol. I will be back in a minute, guys. Am I good?
Hey guys, I'm back. Back again. मैं कितनी बार स्क्रीन को छोड़ के जाता हूँ यार. So let's complete this theory part quickly, and after that we will start solving problems. So ठीक है, कहाँ थे हम? Hmm, methods, string methods, essential string methods. Okay, substrings के बारे में हमने पढ़ लिया. Now ठीक है, starting index, ending index of a substring. Then if we want to return the index, int idx 1 is equals to str dot index of let's say what we want to check. प्रोग्रामिंग में हम किसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है? हमें हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना है प्रोग्राम का. program. Will it work? uh, and let's print it. idx1, let's run it. It is 5. It is right. And if we want to return the index of a particular character only, let's say p, then it will return 5 as well. If we want to return j, then it should return 0. It is working fine. Then if we want to return the last index, like Java is appearing multiple times, but if we want to return the last index of int idx2 is equals to str dot index index of index of which character, let's say g, it what it should return, it should return the first index or last index. It is acha, we have not printed it. Let's print it. idx2, right? Now run it. It is returning 8. It is returning the last index or the first index. It is returning the first index. Int idx3 is equals to str dot last index of g. Okay, so idx2, let's run. Last index is also okay. Why? It should be the last number, right? अच्छा, ये idx2 रिटर्न कर रहा हूँ यार. 3 रिटर्न करना चाहिए ना. Let's run it. It is 15. Yeah, it is working correctly. ठीक है. Mm, Then there are some search and check operations. Check operation. Okay. Then we will do, we will check contains string, starts with, ends with, is empty. Okay. Mm, let's take the example. Boolean. Let's print print. हमने पहला वेरिएबल क्या बनाया था? h डॉट कंटेन्स करते हैं. कंटेन्स एट. ओके. शिट. मेरे नाम में शिट है. शुड बी चेक इट. ठीक है. It should print true, but it is not.
It should return true now. Why it is not returning? H dot contains H is there, shit is there, but it is not returning true. Why? Let's store it in a variable. Boolean. Boolean contains is equals to let's H dot contains contains let's say H. This method contains character sequence in the type string, not applicable to the argument character. ओके तो कैरेक्टर के लिए क्या करते हैं इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर ठीक है सो इसमें हर्ष कर देते हैं HERSH हर्ष विल इट कंटेन हर्ष ओके लेट्स रन इट अरे इसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा कंटेन्स SOUT contains let's print it is not printing why it is not printing true or false it क्योंकि ये तुम बीच में कर रहे हो you are doing it at the wrong place इनको सबको कमेंट आउट कर देते हैं now run it and it will be the only answer it is true and you can also write directly control plus x h dot contains now it is right and you can delete it and it should be working fine now let's run it is true now fine ठीक है substring हो गया contains starts with ends with we can check ठीक है is empty okay then case and formatting to uppercase to lowercase and trim trim is used for removing leading and trailing zeros it is okay split okay string into array string str dot split with comma wherever you find comma convert into array object okay replace str dot ठीक है कॉमर्स को रिप्लेस कर देंगे इससे चलो ये वाला पार्ट करते हैं स्प्लिट एंड रिप्लेस वाला इट इज इम्पोर्टेंट ऐसे यू फ्री इसको कंप्लीट करते हैं क्या था टू अपर केस में कंटेन्स हो गया देन एच डॉट स्टार्ट्स विथ हर start with her so it should return true right yes it is returning true and then the third method is ends with so ends with shit h dot ends with shit and it is true everything ends with shit okay it is working let's check if it ends with sh false it is working correctly as of now string empty SOUT h dot is empty okay and let's check it okay one more thing we need to have sorry brackets normal brackets it is false because it is not empty we have harshit inside the string now to uppercase to lowercase
कर देते हैं SOUT H.2 अपर केस। ये तो सबको ही पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। SOUT H.2 लोअर केस। ओके। एंड द थर्ड वन इज ट्रिम। स्पेसेस ऐड कर देते हैं इसमें, स्टार्टिंग में और एंडिंग में। ठीक है, देन इट विल रिटर्न ओनली विदाउट स्पेसेस H.trim। ओके, नाउ लेट्स रन इट। इट विल रिटर्न। ठीक है, जो फर्स्ट वाला अपर केस में कन्वर्ट किया, लोअर केस में कन्वर्ट किया, एंड देन ट्रिम कर दिया विद स्पेसेस, लाइक स्पेसेस हटा दिए स्टार्टिंग और एंडिंग वाले। देन वी नीड टू learn about the split and replace methods. Split and replace methods. Splits array string into array. So let's say string array parts is equals to str dot split. Split with spaces, right? जहां पे भी इसमें स्पेस दिखे वहां पे स्प्लिट कर दो, एंड देन रिटर्न इट। चलो इन सब को भी कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग पार्ट्स को रिटर्न करते हैं पार्ट्स। ये लेकिन एरर दे देगा, पार्ट्स डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं, पार्ट्स डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, लेट्स रन इट। अच्छा, टू स्ट्रिंग में भी एरर है। पार्ट्स को रिटर्न करें तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फोर ईच, रुक जाओ, फोर स्ट्रिंग string p in parts. Okay, so p. Right, let's run it. Java program. It is returning to the. So it is working. Split वाला part समझ में आ गया हमको. Then we can replace it as well. What it is replace. So let's say we want to SOUT str dot replace all। जावा में ए को क्या आई से रिप्लेस कर देते हैं, ऑल एज सॉरी एज विथ आईज। ओके, नाउ इट will replace all the a's in the str with I, right? It is working. GB programming. Okay, and replace all. Okay, replace is okay. अच्छा ठीक है, replace all uses regex, replace first। ठीक है, फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव कर रिप्लेस करेगा अपनी। कॉमन मेथड अपेंड इंसर्ट डिलीट, डिलीट कैरेक्टर एट रिवर्स टू स्ट्रिंग। ओके, inefficient creates multiple objects, string result equals to string. It is inefficient. Efficient way is storing string builder as b equals to new string, and as b dot append it modifies the existing objects. Okay, DSA problems, we will be solving these DSA problems after a quick break of 20 minutes. So let me create a new note.
So we are back. 21, 21. Today is day number 21. Now we can start solving the problems. पहले बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं जो लाइक oh nice people have started joining us. So we are back. Thank you for staying there. क्या हमें 7 दिन देने चाहिए स्ट्रिंग्स को? It is saying in 2 days we will study about the foundation of strings, essential string methods. ये हमने कर लिया. Basic problems ये हम कर सकते हैं अभी. And then intermediate concept, this is also we have done. We have okay. Priyanshi presents, sir. Welcome back, Priyanshi. Okay, where are the problems? चलो ठीक है. यहाँ से start करते हैं revising a string. ठीक है. तो let's fix the screens. Mm, we are yes code को left side लेके आते हैं और हम लेके आते हैं स्ट्राइवर की शीट को right side में. Now we will reverse a string. Like ये basic problems करते हैं जल्दी से quickly. Right. Reverse a string GRG. Okay. अच्छा उस पे भी होगा लीड कोड पे भी होगा ना सेम प्रॉब्लम. Hey Priyanshi, are you also like solving problems with me or just casually watching the stream for motivating me? If you are actually solving problems with me, then it is really great. So I had solved this problem earlier as well. So the problem states that write a function that reverses a string. The input string is given as an array of characters. Okay. So array of character अगर given है तो you are supporting me. Why don't you start studying yourself as well, Priyanshi? I will get more support if you start studying as well. And teach me. Like you know DSA, right? You have practiced DSA already. Okay. So character array में array elements को reverse कैसे करते हैं? So let's take mm, okay. कैप लॉक को बंद करते हैं. You have done all these.
Okay, then you can definitely guide us. Int start is equals to 0 and int end is equals to s dot length. Okay, while s is less than and start is less than and, we will swap the characters. Okay, so that will be okay. Character 10 is equals to s of अच्छा ठीक है इसको चेंज करना पड़ेगा आई एंड जे कर देते हैं इनको आई जे and while I is less than j, we will create a temporary character and store I and then update s of I with s of j and s of j will become 10. Okay, I think it should work. Okay, and after that we will increase the I pointer and decrease the j pointer and it will work. This is the two pointer technique that we use to reverse an array. What is the problem here? Mhm. It is out of bound. It is getting out of bound. For length 5, okay, we need to add one there. Now it is working. Hmm. So this problem is done. Not as done. Now check Palindrome. Let's search for check Palindrome. Palindrome string. It is on lead code, not linked in. So it is a linear solution that I have already created. What is the solution? ये तो मैंने लगता है चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया था क्या? Hmm, let's try to implement the same logic by ourselves. Okay. Let's read the problem. A phrase is a palindrome if after converting all the uppercase letters into lowercase letters and removing all known alphanumeric characters, it reads the same forward and backward. Alphanumeric characters include letters and numbers. Okay, there's a phrase, but let's first do the string problem only. String palindrome, GFC. You are given a string S. Your task is to determine if the string is a palindrome. A string is considered a palindrome if it includes the same forwards and backwards. So what we will do, we will copy this reverse string function and
added to this public void reverses point. Let's say um, reverse string s dot to character array. Character array. What's the correct spelling of the C should be capital or small? Character array, capital. Okay, so I was doing right. Character array. And then we need to compare. So इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा. System dot out dot. अच्छा, रिटर्न टू करना है ना. Boolean answer is equals to s dot equals reverse reverse string. अच्छा, इसको कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं. C and paste. So it will check if given string is a palindrome or not. What type? Void type not allowed here. अच्छा ठीक है, इसको तो पहले कैरेक्टर आइडन कैरेक्टर हो गया. इसको रिटर्न करवाता हूँ का कैरेक्टर आइडन. राइट. Okay, and then it will return s. So it will return a character array. Then we will convert it to string. And let's run it. So guys, I have not solved any problems in strings earlier. Cannot find the symbol. So reverse, reverse, string. What common name? Hello, Satwaj bro. How are you? अच्छा ठीक है, टू स्ट्रिंग वाला मैथड गलत है. Let's check. Well done, well done. What? Missing return statement. Okay, we need to return the answer as done. How are you, Satwaj? Satwaj edits. तुम एडिटिंग करते हो? Hello, hello, hello. Hello, Satwaj.
Mm, let's change this from character array to string. पूरा रिवर्स वाला मेथड ही नया बनाते हैं स्ट्रिंग के लिए. So let's say public static. Okay, public static. ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. सारा सीधा मुझे नहीं बचाएगा तो प्रॉब्लम वाला. We will keep iterating over the. हाँ ब्रो, पहचाना पहचाना. He met on the live. Okay, क्या था? int I is equals to 0, int j is equals to s dot length minus 1 and 1. Then while I is less than j, compare if character at I, okay, s dot character at s dot character at s dot character at I is not equals to not equals to s dot character at j. Okay, then what we will do, we will return false. ठीक है, and continue with I plus plus and j minus minus. Okay, after that we will return true. Okay, मुझे स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स में बहुत कंफ्यूजन होता है इसके इतने सारे मेथड्स की वजह से. ठीक है, ये वाला वर्क कर गया. It worked. Okay, you get marks for only the first one. So we have done it. Check palindrome भी हो गया. Done. Let's count vowels and consonants. हाँ, ये प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व नहीं किया. So a substring is a contiguous non-empty sequence of character within a string. A vowel substring is a substring that only consists of vowels a, e, I, o, u and has all five vowels present in it. Okay, so we need to return the substring if it contains the vowels. What logic can we think of?
So if we need to return the largest substring or number of vowel substrings in word. Okay, we need to return the number of vowel. So let's say int count is equals to 0, and then we will iterate over the string word. Ram, 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 Ram. Hello, Mr. D. Welcome back. मैं क्या करने वाला था? Hmm, I let's say int I is equals to 0 and int j is equals to word dot length length minus 1, right? Minus 1. Okay, so while I is less than j, what we will do, so we will keep checking if word dot character f word dot character f I if it is equals to क्या चेक करता है कि ऑब्जेक्ट का डेटा सेम है कि okay, so it is equals to a, like that is a, or um, word dot character at I character at I is equals to e or a e I a e I and okay. Or other you. So if any of these conditions is true, that means if it contains any of the vowels, we will increase the I pointer. Okay. So we will update first C is equals to 1. That means we have encountered the vowel for the first time and will increase the I pointer, else we will do if C equals to 1, then we will update count plus plus. Otherwise,
दैट मीन्स के वॉवल भी एनकाउंटर नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, so it will stay, it will do nothing, right? It will do nothing. And then we will return count. So return count. One more thing, we need to a substring, ठीक है, a vowel substring given a string, return the number of vowel substrings. You. Okay, let's try to run it. If it works, then it's great. I at a time limit exceeded. अच्छा ये J से less than, what wrong am I doing? PLE क्यों हो रहा है? It keeps on checking and checking and checking. Hmm. What's wrong in this approach? J is word dot length minus 1. If word is any of these, C will be 1 and I plus plus. I will keep on increasing and then it will check again. If it is again a vowel, it will increase, and once it finds no vowel, अच्छा ठीक है, सारे vowels हुए तो क्या करना है फिर? इसमें करता हूँ if I equals to J and ठीक है, I equals to J and C equals to 1, then count equals to 1, otherwise nothing. It will return. Again, Unicode Marine. Meaning it is count 1, then O, it is count 2, A, it is 3, I, it is 4, A, it is 5. It should return 5, but it is not. Hmm, so because what sliding window से होगा, but what's wrong in this approach? I want to know. Let's ask ChatGPT.
Okay, you are counting vowel substrings in a string, but your code has multiple logical issues that will cause infinite loop or incorrect results. Let me break it down. I is not always implemented in the else block. I never increases infinite loop. Okay, I got it. ठीक है, you stop when I decide you compare I equals to j, which will almost never be true because loop exits before I equals to j. Okay, very neat mistakes. ठीक है, you are using C as a flag for inside vowel substring that resetting implementing is inconsistent. Count equals to one line at the end will override it as counts. Okay, you need to track consecutive vowel segments. If you just want the number of vowels, it's much simpler. Okay, we will check if it is vowel at after to return the possible number of substrings. If I told you, or if I told you, but if it asks about, okay, one more misinterpretation done by me is a vowel substring is a substring that only consists of vowel and has all five vowels. ये चीज तो मैंने read ही नहीं थी ना यार. How stupid I am. ये चीज तो मैंने रीड ही नहीं की कि उसमें सारे बबल्स होने चाहिए. It should have all the vowels. So, so how he has implemented the approach. Okay, count equals to 0, n equals to word dot length, and for loop, if the word that characterize vowel, we will expand the substrate. 4 in j equals to I, j less than n, j plus plus. If the word that index j is also vowel, we will increase the count. Consonant with substrings. But the problem is different. The problem states that it should have all the five vowels. How to do this? In this driver sheet, is it included? It is not included. Anagram problem, short character word frequency, count number of substrings, longest palindrome substring, beauty of all substrings, sum of beauty of all substrings, reverse every word in a string. What's a easy problem भी नहीं बन रहा यार string का. Let's close this and try to think of my own solution. So we need to find out the number of substrings which contains all the five vowels. All the number of vowels. Okay, and only consists of these. So how to check it? It will be done using sliding window.
Do you need to continue generating larger substrings if you encounter a consonant? Count variable substrings. मैं सोच रहा था कि आपने सारे स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स कर दूं मैं पीछे प्रॉब्लम्स ही नहीं बनने का सकते How to check if it contains only these five problems? Substrings मेरे लिए difficult क्यों नहीं?
Still confused. It is a easy problem. Let's start with int I is equals to world dot length and int count is equals to 0, and then we will iterate using a for loop, like we will iterate over all the substrings. So int I is equals to 0, I less than I plus plus, and then we will iterate using int j equals to I plus 1. ठीक है, I के बाद वाला कैरेक्टर j less than equals to n, j plus plus, and सब स्ट्रिंग के लिए एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग s is equals to word dot substring of I comma j. ठीक है, तो ये सारे सब स्ट्रिंग्स को स्टोर करता जाएगा, and then we will have to check if it contains only vowels, vowels, vowels. ठीक है, we will create a method with this, and it contains all vowels inside. It's not sub, it's s and s, and then we will increase count only if it has only vowels and it contains all the vowels, right? Mm, and after that we can return count. Okay, and we need to create two methods to check. One to check if it contains only vowels, and another to check if it contains all the vowels. So let's make the function public static boolean only vowels, and it will take string s and check if it only contains vowels. So we will use a for each loop,
for character C in s dot to character array. मतलब गिवन स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे देन फिर एवरी कैरेक्टर वी विल चेक इफ a e I o u dot index of c equals to minus 1 and we will return false, otherwise we will return true. Now I got it. We will do one thing, we will check for each character if it is not in this substring, that it means it is a consonant, and if it is a consonant then the substring does not contains only vowels, and if the substring does not contain only vowels then it is not true, so we will return false. And if the substring contains all the vowels, only vowels, then it will return true. And we will create another function, public static boolean contains all vowels in string s. Then we will check for each character for character C s dot to character array if a e I o u dot index of C is not equals to minus 1, then how can we check if it contains all the vowels? Let's create a hash set. Set character set equals to new hash set, right? And then we will add set dot add C. Like if it is if the substring contains, okay, and return set dot size equals to 5. That means if our set contains all the 5 vowels, then we will return true. And it will only uh, increase the count only if both the function returns true. It is working. Let's submit it. It might not be the best solution, but it is the working solution right now. Okay. Now let's improve the approach.
How can we optimize it? I was here to solve driver shoot early. वो पायलट से भी पूछता है stop it, sonnet, stop it. Now you have a comprehensive example that got interesting to ये कहाँ पहुँच गया? Add this string operation to your file and predict the output. Now you're having a comprehensive sample. The error also depends. Okay. Okay, we need to count and vowels and consonants. Okay. String methods. Okay. So let's solve these questions one by one. Mm, Let's create a folder inside your computer. And name it basic problems. Okay. And inside it, what are the problems? The basic problem. Inside basic problems, let's do it first. So underscore 03 underscore count vowels. So like the count vowels dot Java. Vowels and consonants don't go with right? Vowel, consonant, CON, Mr. Annual, plus consonants. Okay, and let's create it. PSVM. Okay, so should we take input instead give it? Mm, So complete the vowel counter. Answer this prediction by question. Okay. You need to implement the vowel counting logic here. What should do?
So let's create a string sentence. Sentence is equals to programming is fun with logic. Okay, and we need to count int vowel count is equals to 0. ठीक है, यहाँ पे लिखना है solution, यहाँ लिखना है. So let's start. Given sentence is programming is fun. Okay. Write code to count vowels in sentence. Expected output 6 vowels. Okay. Now for and I is equals to 0, I less than sentence dot length minus 1. Right. So right on 5 plus plus. Okay, now we will go from the first character to the last character and we will compare how to check if A, E, I, O, U dot O character C in sentence dot to character array. Okay, for each character in the sentence, we will compare if A, E, I, O, U dot character add क्या मेथड था यार we have to check index so index of the index of the character C if it is equal, if it is not equals to -1, that means it is a vowel. Then we will increase count.
mm, variable must be a variable. Okay, count, vowel count increase correctly. View vowel count of this. Okay, vowel count will increase. ठीक है, it same. इसको करते सकते हैं and count vowel वाला प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है तो ये यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं. So okay, I think it should work. Vowels fine, it is saying 5. Hmm, -1 को हटाओ. Where is that length of hmm, it should return 6 now. What is wrong with this? Hmm, try running again. It is saying 5, but the answer should be 6. The programming is fine. ठीक है. A I 4 5. But it has only 5 now. 6 कैसे होंगे? O is 1, A2, I3, I4, use 5. How are there 6 vowels expected? Let me check if there are other files you've created. No, I've not created other files. जल्दी करना है. Magic structure. Bro, so here is my analysis. What you have done so far. Great organization. You have created separate files for different concepts. Okay. Case sensitivity. Lower case. Hmm, क्या? Hmm,
I think I need to improve my logic on strings. And short strings in one shot now. Harsh ownership.
If we try to solve carbon's sheet only, can we solve largest odd number in string? You're given a string now representing a large integer within the largest valuable odd integer as a string. We need to within the largest odd number, right? It's already an odd number.
युगल भाई ये स्ट्रिंग्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करूँ यार। लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है ठीक से। स्ट्रिंग के मेथड्स आते हैं समझ बट प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा है। स्ट्रिंग्स चल रहा सी स्ट्रिंग्स चल ही नहीं रहा स्ट्रिंग। रिवर्स और वैलिड पैलिंड्रोम तो हो गया। फिर प्रॉब्लम क्या है? वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर इन स्ट्रिंग। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जो मेरे से नहीं बन रहा है। 1903 लीड कोड 1903 1903। अब तक ये सोचा कि वी विल फर्स्ट चेक कि जो गिवन नंबर है वो ऑड है या नहीं। मतलब जैसे कि ये जो लास्ट वाला थर्ड वाला टेस्ट केस है, इसमें जो लास्ट वाला नंबर है जो यूनिट वाला डिजिट है ना वही ऑड है, तो ये पूरा का पूरा नंबर ही ऑड हो जाएगा। सो वी नीड टू फाइंड, मतलब कि पीछे की साइड से लाइक फ्रॉम द एंड वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट ऑड नंबर। एंड लेट्स से इसके अलावा कोई वो नहीं है क्या? इसमें बताता हूँ। जैसे कोई नम होता, int num इज इक्वल्स टू क्या होता, वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज ये होता, 7 को हटा दो, 6 8 होता। सो व्हाट वी वुड हैव डन, वी वुड हैव डन एंड से स्टार्ट करूंगा मैं। चेक करना कि लाइक लास्ट डिजिट जो है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा तो पूरा का पूरा नंबर इवन है, वो सॉरी ऑड है, तो हम पूरा का पूरा नंबर रिटर्न कर देंगे। अगर जो लास्ट वाला नंबर ऑड हुआ तो देन वी विल कीप इटरेटिंग टू अ पॉइंट व्हेन वी फाउंड अ ऑड नंबर। तो जहां पे हमें ऑड नंबर मिला तो हम उस पॉइंट तक के सारे नंबर्स को रिटर्न कर देंगे। तो ये लार्जेस्ट ऑड नंबर हो जाएगा। सो हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक? कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। So string num is given. Let's say int n is equals to non.length. अब एंड से स्टार्ट करें अगर, तो फोर लूप लगाते हैं राइट।
हाँ 4 लिखा जाएगा int I is equals to any minus 1। ठीक है, मतलब लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, जब तक I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा I को डिक्रीज करते जाएंगे। So it is the last index and then we will store the character C, मतलब C में स्टोर करते जाएंगे num dot character at I को। So at index I, then we will compare if it is even or odd। So if, अब ये कैसे चेक करें कि इवन है या ऑड? स्ट्रिंग को कैसे चेक करें कि इवन है या ऑड है? बताओ युगल, यही नहीं बताओ मुझे। हाउ टू चेक इफ स्ट्रिंग नंबर इज इवन और ऑड? यहाँ अटक गया मैं। अब डायरेक्टली मैं मॉडुलस ऑफ टू तो लगा नहीं सकता नंबर। चैट जीपीटी से पूछूं क्या? सी माइनस जीरो, ओके ऐसा करके देखते हैं इससे क्या होगा लेकिन। लेट्स चेक। द गिवन कैरेक्टर माइनस जीरो, okay, and then modulus of 2 equals to 1। ऑड होगा तो 1 होगा ना? हाँ ठीक है, वन के लिए चेक नहीं करना, ऑड के लिए करना। तो अगर ऑड होगा तो क्या रिटर्न करना है? वी नीड टू रिटर्न रिटर्न सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग से रिटर्न करेंगे नाम डॉट सब स्ट्रिंग, substring from the first index to the ith index, है ना? आई कहाँ से n माइनस वन से स्टार्ट हो रहा है? n माइनस वन से स्टार्ट हो रहा है तो आई सही होगा या आई प्लस वन सही? अगर कोई भी डिजिट नहीं मिलेगा तो क्या रिटर्न कर दीजिए? रिटर्न रिटर्न जीरो की जगह यहाँ पे क्या होगा? यहाँ क्या होगा? अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके ठीक है, रन करके देखता हूँ। युवन सही है क्या कोड? या अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? आई थिंक सो। मैंने स्ट्रिंग्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं। गलत हो गया। यहाँ पे फाइट होना चाहिए। एन माइनस वन एन एस टू वन कैसे आएगा? तो ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग वाला सही आएगा। जीरो से आई प्लस वन होगा ये, क्योंकि आई इज एन माइनस वन, दैट मीन्स लेट्स से एक नंबर वन, सपोज देयर आर
4 digit, let's say 5 digits. So n minus 1 is n minus 1 is 4, 3, 2, 1, and 0. And if we found the odd number at 1, then अच्छा ठीक है हाँ सब सब स्ट्रिंग तो एक नंबर एक इंडेक्स पीछे तक देता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चल गया चलो थैंक यू सो मच बुलबुल भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता हूँ longest common prefix longest common prefix का एक ही अप्रोच है हम्म, ठीक है कॉमन प्रीफिक्स वाला ठीक है मैं अच्छा ठीक है लार्जेस्ट ऑड नंबर का कोई वो मिल गया था ओके longest common prefix solution example देखो write a function to find the longest common prefix string amongst an array of strings if there is no common prefix written in an empty string we need to find the longest common prefix ठीक है how to first word पे check करेंगे and then we will compare the whole word with the next word. It has flow, then we will compare the flow with this. It has FL only. Then we will put an FL only. So what we can do to solve this longest common prefix. अच्छा ये रहा ठीक है write a function to find the longest common prefix string amongst an array of strings if there is no common prefix return in the string. In the dog ठीक है डॉग को कंपेयर करेंगे इसमें there is no common substance. Okay. सबसे पहला तो अगर डिजाइन स्ट्रिंग ही जीरो मतलब लेंथ जीरो हो तो इसको रिटर्न कर दूंगा एम्प्टी सो if strs dot length ठीक है एरर है ना स्ट्रिंग एरर तो लेंथ से काम आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो देन रिटर्न ठीक है एक एज केस तो ये हो जाएगा देन प्रीफिक्स नाम से एक वेरिएबल लाइक स्ट्रिंग बनाते हैं प्रीफिक्स और एस का फर्स्ट फर्स्ट जो भी वर्ड होगा उसको स्टोर कर देते हैं प्रीफिक्स में जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग होगा उसको प्रीफिक्स में स्टोर कर देते हैं देन वी विल कंपेयर
all other strings with the prefix if it is ना कंपेयर कैसे करें लाइक पूरा प्रीफिक्स अपने पास है और प्रीफिक्स को कंपेयर करना है अगले वाले स्ट्रिंग के साथ सच दैट कि जितना भी पार्ट उसका अगर सेम होगा तो हम उसको श्रिंक करके उतना पार्ट रहने देंगे सो वी विल हैव टू नाउ व्हाट प्रीफिक्स है हमारे पास ठीक है बाकी सारे स्ट्रिंग्स को इटरेट करेंगे तो आई इज इक्वल टू जीरो वाला तो हमने स्टोर कर लिया तो आई इक्वल्स टू वन से आई लेस देन एस टी आर एस डॉट लेंथ तक जाएंगे आई प्लस प्लस अब ये कैसे चेक करना है कि प्रीफिक्स एफएल पर सेक्शन पर अच्छा ठीक है इफ स्टार्ट्स विथ वाला मेथड यूज करेंगे ठीक है इफ एस टी आर एस डॉट एस टी ए आर टी एस स्टार्ट्स विथ प्रीफिक्स अगर ये सही होगा तो ये डाउट पूछ रहे हो या मेरे को बता रहे हो फ्लाइट बी है ना उसमें तीसरा मतलब जो टेस्ट केस वन है ना उसमें तीन स्ट्रिंग्स दिए हैं जो तीसरा स्ट्रिंग है उसमें फ्लाइट है तो फर्स्ट वाले टेस्ट केस में तो मतलब जब फर्स्ट वाले स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे सेकंड वाले स्ट्रिंग से तब तो फ्लो होगा प्रीफिक्स बट जब फ्लो को कंपेयर करेंगे फ्लाइट से तो उसका जो कॉमन प्रीफिक्स होगा वो एफ एल अकेला बचेगा if you are asking and if you are telling me that there is some hint I am not getting it उसमें तीसरा स्ट्रिंग फ्लाइट था इसलिए एफ एल होगा कॉमन प्रीफिक्स ये कैसे चेक करूँ मैं कि प्रीफिक्स अगर मैच करता है नेक्स्ट वाले स्ट्रिंग से so can I return it prefix dot length अच्छा ठीक है while लूप लगा सकते हैं क्या जैसे कि वी विल कीप चेकिंग द प्रीफिक्स के अच्छा ठीक है अगर अगर हमारा जो करंट में जो प्रीफिक्स है वो करंट स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब स्टार्ट जो करंट स्ट्रिंग है वो प्रीफिक्स के साथ स्टार्ट नहीं होती है तो हम प्रीफिक्स का लेंथ थोड़ा डिक्रीज कर देंगे बाय वन कैरेक्टर देन अगेन कंपेयर इट एंड कीप कंपेयरिंग अंटिल इट इज अच्छा ठीक है कुछ तो अच्छा इफ नहीं करेंगे हम्म, ये तो सही है लेकिन अगर ये ट्रू नहीं हुआ वाइल लूप लगाएंगे यहाँ पे वाइल ठीक है इमेजिन के इनिशियली द प्रीफिक्स इज नॉट मतलब जो करंट स्ट्रिंग है वो प्रीफिक्स के साथ स्टार्ट नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है तो लाइक नॉट एस टी आर एस एस टी आर एस
और कौन सा strls है, कौन सा स्ट्रिंग है, ith एलिमेंट वाला। ठीक है। डॉट strt starts with prefix, जो हमारा जो करंट स्ट्रिंग है उससे स्टार्ट होता नहीं है। अगर ये उससे स्टार्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे बाय 1 कैरेक्टर, और करते जाएंगे जब तक ये मैच नहीं होगा। ठीक है। जब तक ये मैच नहीं होगा तब तक हम इसको साइज डिक्रीज करते जाएंगे। तो प्रीफिक्स, अब इसका साइज कम कैसे करेंगे, प्रीफिक्स को अपडेट करेंगे, प्रीफिक्स को अपडेट करेंगे कैसे, इसकी लेंथ डिक्रीज कैसे करेंगे। अच्छा, इसी ने सबस्ट्रिंग स्टोर कर दिया। सबस्ट्रिंग कैसे स्टोर करेंगे, प्रीफिक्स डॉट सबस्ट्रिंग जीरो कॉमा जीरो से प्रीफिक्स डॉट लेंथ लेंथ -1 कर देंगे। सही है अभी तक। वाइल लूप लगाएंगे जब तक प्रीफिक्स जो हमारा मतलब पहला स्ट्रिंग है वो अगले स्ट्रिंग का प्रीफिक्स नहीं होगा, तब तक हम उसको रिड्यूस करते जाएंगे, श्रिंक करते जाएंगे, and after a point it will become a prefix of the next string, and then we will return prefix. Hmm, ठीक है, for loop के बाहर we will return prefix. Anything else I am missing? अच्छा, while loop कब तक रन होगा, while loop तब तक चेक करेगा जब तक prefix मिल नहीं जाता। while loop तब तक चेक करेगा जब I am missing दर्शन। उसका अकाउंट पे मैसेज करो, कमेंट करके आओ, then he will be back. He is a working professional. Well, he is a working professional. We are just newbies. हम्म, ठीक है, सेमीकोलन। झूठ, हो सकता है झूठ, अरे वाह चल गया ये। इसमें कोई गड़बड़ है क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिला तो हम खाली स्क्रीन कब रिटर्न करेंगे। तो, हम्म, तो प्रीफिक्स का साइज 0 हो जाएगा। अब प्रीफिक्स का साइज 0 हो जाएगा तो ये प्रीफिक्स होगा किसी का, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको इफ प्रीफिक्स प्रीफिक्स कैसे चेक करते हैं, इज एम्प्टी, is empty, then we will return empty string and then submit. That's the result need. अरे वाह, beats 100%। लेकिन ये तो ब्रूट फोर्स जैसा कुछ था ना। ये अगर
इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होती है? एक ही अप्रोच है क्या इसकी? Common prefix across all string must exist between the smallest and the largest string. When sorted lexicographically, sorting the array helps bring these boundary strings to that strings. हम्म, ये तो कुछ और ही बोल रहा है। मैंने तो कुछ और ही किया है। ये स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर रहा है। Sometimes it is really very confusing. मैंने तो कोई और लॉजिक लगाया, लेकिन सही आंसर आया। इसका सॉल्यूशन का लंबा क्या है? ठीक है, ने स्ट्रिंग बिल्डर आंसर क्रिएट किया। आंसर के नाम से स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट किया। एरेज को सॉर्ट किया। फर्स्ट वाले एरे को स्टोर किया फर्स्ट में, लास्ट वाले को स्टोर किया लास्ट में। देन फर्स्ट डॉट लेंथ लास्ट डॉट लेंथ कंपेयर किया कि किसकी लेंथ सबसे छोटी है। देन स्टॉप इफ कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। अच्छा ठीक है, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर को कंपेयर किया। ठीक है, लेकिन आंसर ऐड कब कर रहे हो तुम? आंसर बाद में। अच्छा, नॉट इक्वल्स टू होगा। जब तक इक्वल्स टू रहेगा तब तक। ठीक है, आंसर डॉट अपेंड फर्स्ट डॉट कैरेक्टर आई। ये भी अच्छा सॉल्यूशन है वैसे। Next problem, the longest common prefix is done. Isomorphic string. Isomorphic string. Given two strings S and T, determine if they are isomorphic. Two strings S and T are isomorphic if the character in S can be replaced with that T. मतलब टी के अंदर फेर बदल करो। अच्छा, फेर बदल नहीं करना है, रिमूव ही करना, रिप्लेस ही करना है।
hash map का use करते हैं hash table word pattern इसके अलावा check whether one string is a rotation of another if and only if press can be controlled after some number of shifts. Shift on S consists of moving the leftmost character of S to the rightmost position. For example, BCDE, then they become BCDEA. Okay, we need to rotate just by rotating an array, not doing क्योंकि वो इसमें हैश मैप यूज होगा वो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है अभी हैश टेबल हैश और मेहनत करनी पड़ेगी इसको करते हैं ये थोड़ा इजी लग रहा है फोर लूप लगाएंगे और इसको रोटेट करते जाएंगे then we will compare S can be rotated to become gold
Um, let's create a string rotate equals to s. Okay. Then we will equate using for loop I equals to 0 and less than n I plus plus and we will check if the current rotation is equal to the goal. That means s dot equals अच्छा s ने अभी rotate किया ना भाई rotate dot equals goal. If it is true, then return true. ठीक है अगर मतलब रोटेट करने के बाद हमारा स्ट्रिंग गोल के इक्वल हो जाता है तो वी विल रिटर्न ट्रू। रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरो रोटेशन क्यों याद आ रहा है मेरे को? हाउ टू रोटेट अ स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ज्यादातर मेथड तो सब स्ट्रिंग तो रहते हैं सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को उठा के स्ट्रिंग के लास्ट में ऐड कर दो और फर्स्ट वाले कैरेक्टर को हटा दो। हाउ कैन वी डू दैट? And do it repeatedly, but how to do it? बस सुनने तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। See, to rotate a string, you can perform either a left rotation or right rotation. The number of positions to rotate is typically 15 modulo the string length to interface the rotation. Mm, For left rotation and position, take the first 10 characters of the string and move them to the end. That's going to achieve for slicing the string into two parts. अच्छा स्लाइसिंग यही तो मैं बोल रहा था लेकिन करें कैसे? अच्छा substring the substring from index end to the end and the substring from the start to the index end, then concatenating them in reverse order. For example, ठीक है substring बनाते हैं और उनको concatenate कर देते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो रोटेट बाय वन कैरेक्टर कैसे करेंगे? तो जो अपना रोटेट वाला स्ट्रिंग है
रोटेट वाला स्ट्रिंग है, इसमें अपडेट करेंगे, इसका सबस्ट्रिंग ऐड करेंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा? पहला कैरेक्टर को छोड़ दो तो लाइक फर्स्ट इंडेक्स से होगा। आर ओ पी टी रोटेट डॉट सब स्ट्रिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, और उसके पीछे ऐड कर देंगे, उसके पीछे क्या ऐड करेंगे? फर्स्ट कैरेक्टर क्या था? रोटेट डॉट कैरेक्टर एट 0। ठीक है। I got some. Fine. अब ये सही है क्या? गूगल देख रहा है क्या? ये वाला लॉजिक सही है क्या? इतना। अब और क्या चेक करना था कि चलो ठीक है, रोटेट कर लिया, रोटेट करके चेक कर लिया कि इक्वल टू गोल है या नहीं। अगर इक्वल टू गोल होगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, अगर इक्वल टू गोल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसके अलावा और कुछ करना था क्या प्रॉब्लम में? ये है रोटेट स्ट्रिंग, ठीक है। रिटर्न फॉल्स। फाइंड आउट। चल जा मेरे भाई, कंपाइल टाइम एरर दे दिया इसने तो। यहाँ तो पूरी गड़बड़ हो गई। एन नहीं मिला इसको। अच्छा, अपन ने इसकी लेंथ तो निकाली नहीं, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आई इक्वल्स टू, कितनी बार रोटेट हो पाएगा जितनी इसकी लेंथ है? यहाँ पे इसको इंट एन इज इक्वल्स टू एस डॉट एस ही है ना अपना। ठीक है, लेंथ वाली एंटिटी है। ठीक है। ओके, दैट्स डन। चल गया, चल गया, चल गया। एंड नॉट डिफाइंड, हाँ कर दिया, डिफाइन कर दिया, कर दिया, कर दिया। कितना वाहियात सॉल्यूशन है लेकिन ये, 4 मिली सेकेंड। और 78% पीपल यूजेस 0 मिली सेकेंड। इतना वाहियात सॉल्यूशन है ये। कल अब दिन भर मेरे को ना स्ट्रिंग्स का प्रॉब्लम्स खुद से करने पड़ेंगे। आइसोमॉर्फिक नहीं हुआ ना, चेक वेदर स्ट्रिंग इज अ रोटेशन ऑफ अनदर। ठीक है, ये वाला तो सही, मतलब रूट फोर्स में आया। कहाँ गया रोटेट वाला? कितने प्रॉब्लम हुआ है ऐसे रूट फोर्स? 5 2 4 7। अरे 71% acceptance, 44 total 84 problems were solved. Yuval is saying this question has been asked by Goldman Sachs, Apple and Microsoft. लेकिन वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मांगते होंगे ना। ब्रूट फोर्स थोड़ा ही। इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा? कहाँ गया आइसोमॉर्फिक? कितने हो तुम, कितने? इसका मुझे तो दूर दूर तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ रहा इसका। स्ट्रिंग मैचिंग, वीकली कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेस्ट।
चैट जीपीटी से पूछें क्या इसका? ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। अरे गूगल कर लेते हैं। क्या था? रोटेट स्ट्रिंग। अबे 3 लाइन का सॉल्यूशन है ये। 3 लाइन का सॉल्यूशन। 1 2 3। मैं पागल हो जाऊंगा स्ट्रिंग करते करते। क्या किया इसने? डबल्स बनाए हैं, स्ट्रिंग को डबल कर दिया। और डबल्स डॉट कंटेन्स गोल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यार अपना आर्यन कर लेता यार इतने जल्दी सॉल्व कैसे? मैंने गलती तो नहीं कर दी है 45 डेज ऑफ कोड चैलेंज लेके? रोटेट कर देंगे तो डबल करने का क्या फायदा? रोटेट करेंगे। अच्छा ठीक है, रोटेट कर देंगे तो आगे से वो कंटिन्यू हो जाएगा। 9th क्लास से कर रहा है कोडिंग, ये भी है यार। मैं क्या करूं? मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। अपन भी डाल लेते हैं ये सॉल्यूशन। अरे ये तो चेक ही नहीं किया, अगर लेंथ जीरो मतलब लेंथ ही मैच नहीं होगी तो फिर तो हो ही नहीं सकता ना आंसर। ये एक चीज अच्छी पता चली यहाँ से। ये थोड़ी सी वैलिड लग रही है कि चलो ठीक है, कि अगर लेंथ ही सेम नहीं है तो फिर तो आंसर सेम हो ही नहीं सकता। 69 डेज ऑफ कोड। सबमिट। 3 लाइन। वाह रे वाह। किस चीज के लिए वाह रे वाह कह रहा है? आज के लिए बस इतना ही। मेरा मन भर आया। एक और करते हैं चेक। मैं एनाग्राम अपना कल अच्छे से पढ़ने के बाद ही करूँगा। मैं 2 3 घंटे और देना चाहता हूँ स्ट्रिंग्स को पढ़ने के लिए। उसके बाद करूँगा। और लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा फिर मेरा, जब स्ट्रिंग्स में ये हाल है तो? उसके बाद में रिकर्शन, बिट मैनिपुलेशन, स्टैक एंड क्यूज। यार एटलीस्ट बाइनरी सर्च की तक तो पहुंचूंगा यार मैं 45 दिन के अंदर। इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे होंगे? कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी। वो 3 लाइन को भी कौन लिखे? अरे लेकिन बस 5 मिली सेकेंड्स का डिफरेंस था। और 78% लोग 0 मिली सेकेंड्स। मैं बहुत हल्के में ले रहा हूँ इसको। So this was it for today guys. एंडिंग द स्ट्रीम। मेरा हो गया आज का। मुझे थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी। सर दर्द हो गया।
यार आज कोई नया बंदा नहीं आया क्योंकि मैंने कुछ अच्छा किया ही नहीं। संडे रिवीजन। यार संडे रिवीजन करने वाला था लेकिन वो एलटीआई का असेसमेंट तो हो गया जिसने दिमाग खराब कर दिया। दिमाग है ही नहीं मेरे पास। नेक्स्ट संडे को करते हैं। तेरा भी बिगड़ा क्या? केवल भाई को शाउट आउट। युवल भाई अब से हमारा चैनल मॉडरेटर। अरे मेरे साथ तो पता है क्या हुआ। मैंने बता तो दिया यार, पूरा सब तो बताया। 3 घंटे तक तो टेस्ट ही चालू नहीं हो रहा था। और वो कोई एरर भी नहीं दे रहा कि गलती क्या है, कहाँ पे एरर है। वो कुछ फालतू ही वेबसाइट है यार। कैप जी का कब होगा? हाँ। 3 घंटे परेशान हुआ यार मैं उसकी वजह से। उसमें कोई मतलब एरर देना चाहिए ना यार कि तुम गलत भर रहे हो या फिल गलत कर रहे हो। ध्रुव गौर, चलो फाइनली कोई आया। हेलो ध्रुव। As a beginner, like if you are in first year, you can do in Python. If you are mostly on 29th, I hope 29th को ही होना चाहिए। Dhruv, Dhruv, you can do DS in Python as well. Like if you are मतलब तुम्हारा अगर प्लान है कि मशीन लर्निंग और एआई की फील्ड में जाना है तो पाइथन में ही करो, डीएस से स्टार्ट कर दो। और डोंट बी कंफ्यूज्ड, ज्यादा सोच मत कर डाल। और अगर फर्स्ट ईयर में हो ना तो दोनों कर लोगे तुम 2 साल के अंदर अंदर। पाइथन में भी और जावा में भी। वेयर आर यू फ्रॉम ध्रुव? लाइक एंड टेल us about yourself, in which year you are, first year or final year? Hey Dhruv, I will I will end the stream in 10 minutes. If you guys have any doubt, query, anything you want to ask, I will be answering you. And after 10 to 15 minutes, I will end the stream. Okay. So if you guys have any queries, you can ask. Mm, I am from Punjab. I am in Chitkara University, Punjab, and I am a student of CSC in AI. So, bro, you should learn Python quickly. जितना जल्दी हो सके पाइथन सीखो. Don't be afraid of trying out. और
which were फर्स्ट सेम में भाई भाई थोड़ा रेस्ट करो इतनी भी क्या जल्दी है भाई लव यू ब्रो भाई भाई यू शुड लर्न पाइथन and upskill yourself in machine learning and data science. और किसी का कोई डाउट क्वेरी है क्या? Someone who has been to our stream for the first time. Bro, you are from which college? I am from Allen City, भोपाल. कभी कभी मुझे लगता है मैं बताऊं भी या नहीं बताऊं. Sometimes it is really good college. Most of the time it is the worst college. या कॉन्करेंट व्यूअर्स इतने सारे हैं लेकिन कोई कमेंट या मैसेज नहीं कर रहा है लाइव चैट में. Okay, 3 more minutes and I will end the stream at 11:40. Same for what? So. Thank you, Dhruv God, for joining us today. Thank you so much. I hope you will be back tomorrow, but you are doing DSA in Python. I'm doing DSA in Java. You won't like it. Good night, everybody. I am ending the screen now. Um, Okay, bye. Bye, 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 bye.
People are still joining us and not interacting. So I'm on the screen. Okay, now I'm ending it. It's 11:40 now. Good night, guys. Thank you for joining us today. See you tomorrow. Good night, sweet dreams. Bye-bye. Bye. Think of the